ठीक है, तो ये कौन सा चैप्टर है अपना, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक इमेज रखा है, ओके, दैट तो सबसे पहले आप ये देखो, इफ यू रीड दिस, what is written, your brain works just like a computer, and so make sure that you are the only one who is programming this brain. सही बात है क्या ये, आपको लगता है ना? And it is not working like a computer, but it is working like a supercomputer or more than the supercomputer. Just imagine करो कि अपने ब्रेन में कितने सारे कनेक्शंस है ना? More than billions of neurons are present, and all of these are coordinating to give to perform specific function. ठीक है, तो ये हम लोग ये चैप्टर में बेसिकली क्या स्टडी करेंगे, दैट हाउ व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द nervous system. Okay, we will go slightly deep that how it works और कैसे काम करता है. Okay, so basically if we read this first statement, coordination among the different organ system for the homeostasis. So anyone knows the meaning of this homeostasis? किसी को पता है इसका मीनिंग क्या होता है, homeostasis का मीनिंग? I think so I have told you. Temperature regulation, body fluid regulation. So basically this homeostasis mean trying to maintain the constant internal environment of the body. Okay, why? Because living things needs constant internal environment for performing different kinds of biological function. ये बहुत important है. ठीक है, so for example, मैं just एक simple example, suppose this is a cell, okay, which is bounded by this membrane which is called as cell membrane, और इसके अंदर बहुत सारा chemical reactions है, okay, which is going on. So to like to protect this kind of chemical reaction, suppose something A is converting into B or vice versa, something, so some kind of chemical reactions are taking place. तो उसको protect करने के लिए एक membrane होता है present, but the outer environment, okay, the environment which is present outside the cell is keep on fluctuating in a sense. The temperature may increase or may decrease, the pressure may increase or the decrease, the chemical concentration, है ना? तो ये सब कुछ factor है. So these are biotic factor of the environment which may affect the activity which is going inside a cell. So that is why the living system has developed a mechanism which is called as homeostasis. So what is this mechanism? It is a process of maintaining constant internal environment. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर बाहर का टेम्परेचर अगर काफी ज्यादा हो जाता है, then our body will try to sweat. Why sweat? So that our body can maintain the temperature at 37 degrees Celsius. Okay, so how it will maintain? What are the different organs involved in this? Definitely the circulatory system will be involved in this. The nervous system, hypothalamus of the nervous system controls the body temperature. Okay, so to perform the basic function, like to perform the different life process, okay, our organ has to work in coordination with each other. और ये organ को coordinate करने का काम कौन करता है? This nervous system. देखो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने लास्ट चैप्टर्स में, लास्ट 2 चैप्टर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक ऑनलाइन लेक्चर था और ऑफलाइन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? For example, if our body wants to reproduce, then definitely our brain will send signals in the form of hormones, है ना? या फिर for example अगर कोई if there is some kind of reflex action, तो जैसे देखो अगर आपको याद होगा, so as soon as food enters inside the esophagus, जैसे ही food esophagus के enter करता है, then peristalsis movement starts, है कि नहीं? So this entry of food is a kind of stimulus. ठीक है, उसके वजह से क्या मूवमेंट चालू होता है? पेरिस्टालिसिस. बट ये पेरिस्टालिसिस मूवमेंट इनिशिएट कौन करता है? और ब्रेन. ठीक है,
तो ये अपने बॉडी में नर्वस सिस्टम या फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम का मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या है, जस्ट टू मेंटेन द होम्योस्टैसिस, ठीक है। और एक और यहाँ पे मैंने एक वर्ड दिया है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम। सिंक्रोनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, दिस टू सिस्टम, एक कौन सा है, endocrine system, nervous system, they will come together, they will synchronize together to perform a different function, ठीक है। और अगर दोनों में से कोई एक का सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ता है, देन आवर बॉडी विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म फंक्शन, तो फिर क्या होता है, डिसऑर्डर, डिसीज, ठीक है, वो सब होता है। इतना क्लियर है सबको? तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। देन अच्छा, इसमें किसी को डाउट है दैट व्हाई वी नीड कंट्रोल सिस्टम और व्हाई वी नीड कोऑर्डिनेशन सिस्टम? इसमें किसी को डाउट है क्या, या फिर कुछ पूछना है और? यस, नहीं? नो सर। नेक्स्ट जो होता है, मतलब एक मैंने यहाँ पे एनालॉजीज रखा है, मैंने सेम एनालॉजी भी यूज किया है फॉर द एंडोक्राइन सिस्टम, वो पीपीटी मैंने भी रखा है। बट सो व्हाट इज लाइक, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन द इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, तो एक डिफरेंस यहाँ पे क्या है, ये जो साइटोकाइनिन है ना, एक केमिकल होता है जो अपने बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है। तो अपना इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस साइटोकाइनिन, बिकॉज दिस साइटोकाइनिन एक्टिवेट्स द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, सो दिस इज रिलेटेड विद द इम्यून सिस्टम, ठीक है। अपना नर्वस सिस्टम कैसे करता है, इट इज वर्किंग लाइक अ टेलीफोन सिस्टम। देखो ना, बीच में जैसे कि अपने पास एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, फिर वहां से कुछ वायर्स जाते हैं विच विल रिसीव सिग्नल, एक और वायर जो है जो सिग्नल को सेंड करता है। सो आवर नर्वस सिस्टम इज एक्टिंग लाइक अ टेलीफोन सिस्टम। और जो अपना एंडोक्राइन सिस्टम है वो कैसे काम करता है, मोर लाइक अ रेडियो और अ टीवी नेटवर्क। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, बिकॉज द रिसीवर and the sender of this system is not directly contacting each other. होता है क्या, जैसे मान लो कि अगर मान लो कि सपोज दिस इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके, सपोज दिस बॉक्स रिप्रेजेंट्स पिट्यूटरी ग्लैंड, तो रिसीवर जो होगा कहीं और होगा, सेंड सिग्नल सेंड करने वाला कहीं और होगा। सो दे आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, ठीक है। तो ये जस्ट एक एनालॉजीज है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हाउ द नर्वस सिस्टम, हाउ एंडोक्राइन सिस्टम and how the immune system works, okay, ठीक है, समझ में आ रहा है इतना एनालॉजीज? चलो फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, द न्यूरल सिस्टम, विच इज द मेन टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन। तो ये क्या है, द न्यूरल सिस्टम ऑफ एनिमल is composed of highly specialized cells, okay. Why we call this cell this specialized, because this cell has modified itself to receive and distribute, like for example, देखो अपने को पता है ना बेसिक आइडिया अबाउट द न्यूरॉन, दैट दीज आर द डेंड्राइट्स, है ना, ये क्या है, दीज आर द डेंड्राइट्स which receives signal from the outer environment or from the other neuron, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रोसेसिंग होता है, then that signal is sent to the other neuron or to the effector organ via axon, ठीक है। So our nervous system, not only in the humans but in all the animals which has nervous system, so their nervous system is made up of neuron, okay, which can detect, receive and transmit different kinds of stimulus, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद आपको रखना है। देखो अगर आपने 11th का जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें ये दिया ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फीचर क्या है, दे कैन रिस्पॉन्ड टू द डिफरेंट स्टिमुलाई, या आपको शायद से याद होगा, है ना, लिविंग कॉन्शियसनेस। रिसीव, दे कैन रिस्पॉन्ड टू द डिफरेंट स्टिमुलाई। तो वो स्टिमुलस को रिसीव करना, डिटेक्ट करने के लिए living organisms, mostly animals, they have made specialized cells, and that cell is called as neuron. So what is neuron? It can detect, receive and transmit different kinds of stimuli, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको?
एनी डाउट? नहीं ना? चलो फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक रियल इमेज रखा है। दिस इज अ माइक्रोग्राफ ऑफ अ न्यूरॉन। ओके, सो इफ यू सी द माइक्रोग्राफ ऑफ अ न्यूरॉन, आपको दिख सकता है बीच में क्या है, दिस इज द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटॉन और स्टोमा, सोमा सोमा कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये जो है बीच में का, दिस इज सेल बॉडी और साइटॉन। ठीक है, तो मैं अभी आपको क्या दिखा रहा हूँ, द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो वो क्या होता है, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का ये जो बीच वाला पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज साइटॉन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, सेल बॉडी। ठीक है, दिख रहा है आपको बीच में ये न्यूक्लियस है, देन उसके बीच में एक और यहाँ पे कुछ अच्छा ये क्या है, दिस इज न्यूक्लियोलस, देन दिस माइट बी सराउंडेड बाय द न्यूक्लियस। तो ये सब प्रेजेंट है, एंड ये आपको दिख रहा है, दिस इज डेंड्राइट्स व्हिच विल रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द डिफरेंट न्यूरॉन्स और फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। फिर ये क्या है, ये एक्सॉन हिलॉक है। मैं आपको इसका फंक्शन बताऊंगा इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। तो ये एक्सॉन हिलॉक का भी एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ओके, then ये यहाँ पर क्या है, this is actually, it is showing that this is the axon. okay, then यहाँ पे देखो ये कुछ आपको दिख रहा है, this is glia, दिख रहा है। so this glia is actually what it is, the glial cells, उसको हम लोग कहते हैं न्यूरोग्लायल सेल्स भी कहते हैं, न्यूरोग्लायल सेल्स। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, टू रिमेन अटैच्ड विद द न्यूरॉन्स। ओके, और जब आपने शायद सुना होगा कि जब किसी को ब्रेन ट्यूमर होता है ना, तो एक्चुअली ब्रेन ट्यूमर में क्या होता है कि दिस न्यूरॉन इज नॉट डिवाइडिंग। ओके, द नंबर ऑफ न्यूरॉन रिमेन्स सेम थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम, नॉट एग्जैक्टली सेम बट ऑलमोस्ट सेम। बट ये जो होते हैं दिस ग्लाइयल सेल्स, दे कैन मल्टीप्लाई। तो ब्रेन ट्यूमर में क्या होता है, this glial cells will abnormally divide, and that division or that formation of tumor causes it disturbs the functioning of the neuron. इसलिए ब्रेन ट्यूमर का सही नाम क्या है, ग्लायोमा कहते हैं उसको। So what is glioma? Glioma is a tumor of glial cell. ये आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो, ट्यूमर ऑफ ग्लायल सेल्स, GLIALC। ठीक है, इतना क्लियर है? यस। तो एक तो बस ब्रेन ट्यूमर में क्या होता है, द मोस्टली ओके, ऐसे और बहुत सारे सेल्स होते हैं न्यूरॉन के पास, जैसे होता है एस्ट्रोसाइट्स, ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं दैट वी विल स्टडी। बट ये जो ग्लायल सेल्स होता है, अगर इसका ट्यूमर फॉर्म होता है तो वो ट्यूमर को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लायमा। एंड दिस इज ऑल्सो रेफर्ड एज ब्रेन ट्यूमर। ये ग्लायमा क्या होता है, दिस इज अ ब्रेन ट्यूमर which affects the normal functioning of the brain। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको, ब्रेन ट्यूमर। चलो फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। Yeah, this is also very important, like how the nervous system has evolved throughout the animal kingdom. ठीक है, this is one of the very important subtopic in this chapter. तो देखो, अगर आप simply if you see in case of the hydra or the cnidarians, दिख रहा है आपको, they have just nerve nates। दिख रहा है आपको, this thin thread like structure, so they just have this nerve nates, ऐसे कुछ nerve nates होते हैं which are interconnected with each other so that they can respond to the external stimuli। तो ये tentacles में कुछ nerve nates है, कुछ उसके body में है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, टू कोऑर्डिनेट द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, लाइक टेंटाकल्स के मूवमेंट में हेल्प करता है, मतलब कहाँ पर फूड सोर्सेस है, किस टाइप के वाटर करंट को क्रिएट करना। सो फॉर ऑल दिस थिंग्स नर्व नेट इज वेरी यूजफुल। ठीक है, सो नर्व नेट इज प्रेजेंट इन द हाइड्रा, ये आपको याद रखना है। ओके, सेकेंड जो होता है अपना जो सी स्टार है, दैट इज काइनोडर्म्स, उसमें भी क्या होता है, एक बीच में क्या प्रेजेंट होता है, नर्व रिंग,
फिर वो सेंट्रल नर्व रिंग से उसका जो एक्सटेंशन होता है दैट इज कॉल्ड एज रेडियल नर्व. सो दिस रेडियल नर्व इज इनर्वेटिंग ऑल द आर्म्स ऑफ द स्टारफिश. तो ये स्टारफिश का जो आर्म्स होता है उसके कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट में ही हेल्प करता है. ओके तो ये स्टारफिश में क्या प्रेजेंट होगा, नर्व रिंग, एंड फ्रॉम दैट नर्व रिंग अ सिंपल radial nerves are arising which will help in the coordination of the this food. ठीक है, इतना क्लियर है आपको? तो देखो थोड़ा सा एडवांस्ड आ रहा है अभी, मतलब इसमें सिर्फ नर्व नेट था, इसमें क्या हो गया, नाउ दे हैव रिंग, दे हैव दिस रेडियल नर्व एंड ऑल. Okay, and if you slightly go again, if you slightly see the highly advanced, slightly, not the highly, but slightly advanced animal, then you can see in this planaria, which is also called as flatworms. So they have eye spot. These are not eye, but these are the eye spots. Okay, and they have some structure which is considered as a brain, but these are very primitive type of brain. But from the brain, you can see that they, the two nerve cord is arising. दिख रहा है आपको? They in this flatworms, nerve cord is arising. पर अगर आपने पढ़ा होगा in the previous standard during the classification of the vertebrates and invertebrates, उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि vertebrates do not have आपने ये पढ़ा है? अच्छा मुझे ये बताओ पहले, पढ़ने से पहले कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में डिफरेंस क्या होता है? यस, एनीवन कैन टेल मी एटलीस्ट सम बेसिक. आपको ये पता होगा ना कि वर्टिब्रेट्स में जो है नोटोकॉर्ड जो प्रेजेंट होता है दैट इज डॉर्सल. ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिखा है. सो यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट अगर आपको भी याद नहीं आ रहा है तो. सो वर्टिब्रेट्स हैव डॉर्सल नर्व कॉर्ड, whereas invertebrates may show presence of ventral nerve cord. Okay, some of the invertebrates they also have nerve cord, but that is present on the ventral side of their body. Okay, so this is very important point. Like these flatworms, annelids, these arthropodas, all of these are what, even the chiton, squid, all of these are what, they are invertebrate, but still they shows nerve cord. So why they show? Because so why we are not considering these as a vertebrates, because they have ventral nerve cord. ठीक है, so this would be the second point. ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हो. In invertebrates आप ऐसा लिख सकते हो कि some of the invertebrate shows the presence of ventral nerve cord. ठीक है, डन. ये सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Good. You all should say yes ना, but सिर्फ एक ही बच्चे बोल रहे मुझे. You all should say. ठीक है, so please note down this ventral nerve cord is present in some of the invertebrates. Okay, and if you see, देखो ये nerve cord से there are few transverse nerves are presenting which is connecting these two nerve cord. So in short, what you have to remember that in some animals, like in Hydra, nerve net is present in the in the sea star or in the gynoderms, nerve rings are present along with the radial nerves. In the flatworms, they have ventral nerve cord with a less differentiated brain and the eye spot and some transverse nerve. Leech है ना, ये कौन सा ये कौन से ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स है? ये कौन से फाइलम को बिलोंग करता है? फाइलम है ना. तो इनके पास भी क्या होता है, दे हैव अ लेस स्पेशलाइज्ड ब्रेन, बट फ्रॉम दैट ब्रेन अ कॉमन ट्यूब, अ थिक नर्व कॉर्ड इज अराइजिंग. ओके, एंड ये नर्व कॉर्ड के बगल में इन ईच सेगमेंट दे हैव लाइक दे हैव ब्रांच्ड नर्व्स. ओके, तो लीच पे क्या प्रेजेंट होता है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड एंड द ब्रेन. उसके बाद फिर क्या आता है, इंसेक्ट्स like this is a grasshopper. तो इसमें भी क्या होता है, they have brain, they have ventral nerve cord and they have ganglia. Okay, so now you can see like इनके पास ganglia नहीं है but they have ganglia. Okay, in the later part of the chapter we will see what is ganglia, what is
nerve fiber and all, पर दिख रहा है आपको गैंग्लिया इसके पास प्रेजेंट नहीं था, बट दिस इंसेक्ट हैज गैंग्लिया. तो अगर आप देखोगे यू कैन सी दैट as we are moving ahead, we can see the complexity of the nervous system is keep on increasing. दिख रहा है आपको? ठीक है. नेक्स्ट कौन सा है? दिस इज दिस काइटोन, ओके, which belongs to the phylum mollusca. So काइटोन के पास भी क्या है? गैंग्लिया है, नर्व रिंग है, longitudinal nerve cords है, then squid again from the phylum mollusk. Squid और जो एक और होता है octopus, ऐसा कहते हैं कि they have a highly developed brain among the invertebrates. ठीक है. So they also have brain, they have giant axon, okay, and in case of the chordates, okay, like ये सब क्या था? They were non-chordates ना, ये सब क्या है? Non-chordates, but ये क्या है? Chordates, sorry. ठीक है. तो ये सब जो थे वो सब क्या थे? Chordates. तो chordates के पास अगर होगा भी nerve cord तो वो कैसा होगा? Ventral nerve cord. ठीक है. इन और ये जो तो ये सब क्या है? This is non-chordate. और ये जो है this is one chordate which has dorsal nerve cord. ठीक है. सो ये ब्रेन हो गया, फिर ये आईज है, then from the brain spinal cord is rising, and from the spinal cord you can see some like sensory ganglia is present in between this. फिर कुछ nerves जाते हैं which helps in the movement of their body parts. ठीक है. So this was a brief idea about